Custom exception are created when the class extends from the exception class are not thrown by the standard Java class library. Class may override method or add the new functionality. It captures the information about a problem that was occurred. Custom exception are created when a class is extends from exception class. Custom exception हमें कौन करिवा? Custom exception काहाको कुआ जाए? जो exception गुड़ा का user बने थे, user जो exception गुड़ा का बने थे तो जो custom exception are not thrown by the Java standard class library. Class may override the method or add the new functionality. Okay. जेमति कि हमें मु डिस्कस करथिले जेतेबेले हमर लॉकडाउन शटडाउन होतरा डिफरेंट स्टेट निजर केसेस देखिके से माने कोन करथिले ना हैंडल करथिले केतेबेले कोन कोटी शटडाउन लागिवो कोटी लॉकडाउन लागिवो गोटे गोटे स्टेट रो ओपन नै होतरा गोटे गोटे स्टेट ओपन होन होतिला इट मींस व्हाट गवर्नमेंट कहतरा सब खोलिबा पई किंतु से माने निजर केसेस देखिए निजे निजे रेस्ट्रिक्शन सब लगो कस्टम एक्सेप्शन सेंती जेमति कि हमें किछि कंडीशन चेक करिवा बेस्ड अपॉन द कंडीशन हमें एक्सेप्शन पकेवा माने धर ए कंडीशन ता ट्रू न हो जे ताले एक्सेप्शन आसी आर क्रिएटेड व्हेन ए क्लास इज एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लासेस are not thrown by the standard Java class library. Class may override the method or add the new functionality. For handling the custom exception, we are using throw new DAO exception. Get message method is used for a string type. All exception class inherit from the throwable. It return the string to the get message method. हमें जो try and catch रे catch block रे exception class रा object बनाऊचे object is not in a readable format. Object को readable format रे show करिया पे हमें use करिवा get message method. The get message method is used to show the object into the readable format. That is called the get message. Next is assertion. Assertion is what? Assertion you can say that for checking your logic. For checking your logic, first you have to taking a sample value and based upon the sample value, you have to ensure your value is correct or not. Means you can say like कमे तले कौन करो ना घरे तरकारी हुए माने तरकारी करंती तरकारी टा कोन स्वाद अछि ता पूर्व टिके आनि चखन assertion होजे सेमती it is only used for the testing purposes while delivering the software first of all you have to check that whether your program is correct or not. For ensuring that your program is correct or not, by using assertion, it ensures that application is executing as expected, document and verify the assumption of a logic. Just a minute. Assertion is what? It is not enabled. It is not enabled automatically. It ensures that application is executed as expected, document and verify the assumption of internal logic of a single method. It implementation type. One is internal invariant, control flow invariant,
post condition and class invariant. Assertion na me केमती check करिवा किछि internal value नवा किछि control flow invariant नवा किछि control flow ने के हमें check करिवा आ किछि pre and post condition हमें ने कि check करिवा किछि previous condition नवा किछि post condition नवा post condition and class invariant eta neba assertion is not enabled by default assertion ta enabled न थाए ताको हमको enable करिया को पड़े assertion ta enable करिया पे हमें यूज करिया कोन java enable assertion my program और java ea my program java enable assertion my program or java ea my program that is a assertion so assertion is disabled by default to make it enable we're using java enable assertion or java ea my program that is a way of defining a assertion program. Okay. So हमें देखिवा एबे किछि program it is based upon the exception handling. Hello. Okay. Excuse me. Here we use array, int array 10, 20, 30, and now 0, 1, 2, 3 index I have. Now I want to access the 10th element.
So 10 element is not present. 10 index number here not present. So it shows an exception. Okay, so 10th element is not present. It shows an exception. Catch array index of bound exception. Okay, so which type of exception? माने को type of exception आसीबो array index out of bound exception. A exception टा आसीबो. तो finally block से एटा show करिवो out of the block. So exception thrown for the region of 10. Okay, এটা আমি লিখলে কোন e dot get message finally block দেখো এটি execute হলো out of the block. এটা হলো ফাইনালি ব্লকটা কোন হবে না যদি এক্সেপশন আরাইজ হবে ফাইনালি ব্লকটা এক্সিকিউট হবে যদি এক্সেপশন আরাইজ ন হবে বি ফাইনালি ব্লক এক্সিকিউট হবে তো এটি মোর কোন আসিলা এটা মু অ্যাক্সেস করুচি এলিমেন্ট 10 ইন্ডেক্স आ ভিতর 10 ইন্ডেক্স নাই এটি ইন্ডেক্স আছে কোন 0 1 2 এটি এক্সেপশন আসলে এটি এক্সেপশন থ্রোন দেখাইলা out of the block এটা ফাইনাল ব্লকটা এক্সিকিউট হলো suppose if I access second element so now I access the element second 0 1 2 এটা আমরা শো করে 30 তো এটি বি এক্সেপশন মানে এক্সেপশন নাই মতে থার্ড এলিমেন্ট এটি জেনারেট কলা তারপর আউট অফ দ্য ব্লক এটি মতে দেখিলা মানে ফাইনালি ব্লকটা কোন হচ্ছে ইট ইজ এ ব্লক if your exception arises it is execute if your exception not arises then also it is
ଗୋଟେ minute ଟିକେ so next program user defined exception next program. The user defined exception here, if you see that here we define a static method, static void validate int age, ଗୋଟେ static method define କରାହେଲା। ए मेथड भीतर डिफाइन कराला जो एज टा मु पास करिवि से एज टा जदी लेस देन 18 हैला ताले एटी देखेबो नॉट वैलिड और एल्स एटा शो करिवो वेलकम टू वोट। ए जो वैलिडेट फंक्शन अछि ए वैलिडेट फंक्शन टा को मु कॉल कली 11 टा मु एटी पास कली एज रे, यदि एज इज लेस देन 18 रहउची ताले देखेबो नॉट वैलिड। ओके, when age is less than 18 ताले एक्सेप्शन थ्रो करिवो, से एक्सेप्शन थ्रो करिवो देखेबो इट इज नॉट वैलिड। जदि एठी मु 18 नो अधिक वैल्यू दिखौची ताले मते एक्सेप्शन थ्रो करिवोनी, एल्स ब्लॉक टा एग्जीक्यूट हबो, सेटा देखेबो वेलकम टू वोट। नाउ चेक हियर,
time. I again execute it. In Java, it is so color. That it is a arithmetic exception not valid. Arithmetic exception not valid. Suppose I pass here 19. Welcome to vote and rest of the code. Exception of program. तापर अच्छी किसी अलग प्रोग्राम लिखिबा सॉरी होला तो एटा सॉरी होला तो नेक्स्ट क्लास रे मैं पढिबा जेनेरिक क्लास टा पढिबा जेनेरिक क्लास टा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर टा ओके तो काली एटा पढिबा मिस करिवनी क्लास टा सर सुना जावने वॉइस एबे सुबिला हेलो हेलो एबे सुबिला वॉइस हेलो वॉइस सुबुची मो कथा हां सर सुना जावने
କହିଲେ ଏଇଟା exception handling chapter ଟା ସରିଲା next class ରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା collection classes ଟା ପଢିବା ଓକେ ଯୋଉ generic class important chapter ଟା ମିସ୍ କରିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍